Hey yo, hello, my name is Anam Nadeem and welcome to another episode of Pitch Pulse. पिछले कुछ दिन स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट्स के लिए काफी हैपनिंग रहे। Alcaraz thrashed Djokovic, Spain not letting the Euro Cup go home, Argentina winning yet another trophy, Mbappe following the footsteps of his idol, the Ambani wedding and so much more, all before GTA 6. नहीं, शो पे अभी भी आपको मिलेंगी क्रेडी सब खबरें शबरें मीम्स रील्स और बहुत कुछ सब अंडर वन रूफ। ऑन द शो दिस वीक द चीफ सिलेक्टर सागा, स्काई ओवर पांड्या, फ्रॉम प्लेयर टू मेंटोर, एंडरसन स्मूथ ट्रांजिशन, एक कैच ने मचाई धूम, दिस एंड अ लॉट मोर ऑन पिच पल्स। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का ऑन द फील्ड सीजन ऑफ चल रहा है, लेकिन ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज इंश्योर देयर इज नेवर अ डल डे। वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद काफी क्लियर था पीसीबी करंट मैनेजमेंट शफल करेगा, सो चीफ सिलेक्टर / सीनियर मैनेजर वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक वर शोन द रेड फ्लैग। ऑब्वियसली वहाब वाज़न्ट हैप्पी हाउ थिंग्स एंडेड, लेकिन ब्रेकअप्स आर नेवर इजी। दूसरी तरफ हेड कोचेस Jason Gillespie and Gary Kirsten have been added to the selection committee and they will work alongside the captain Mohammad Yusuf and Asad Shafiq. Robust and strong to represent your country. That's personal pride, that's professional discipline, that's being a professional sportsman. So PCB ने further कुछ key decisions लिए हैं, जैसे कि 3 monthly fitness tests mandatory होंगे, फिर कोई technical method establish किया जाएगा NOC for T20 leagues issue करने के लिए। By the way, there is still no certainty if players would be allowed to feature in the GLT20 and the 100. इन key decisions की implementation कैसे करवाई जाएगी वो देखना काफी interesting होगा when we find out. By the time you guys are watching this video, Women's T20 Asia Cup already शुरू हो चुका होगा, पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेल रहा होगा। वैसे I'm predicting a Pakistan victory, fingers crossed. Unlike the men's side, this match never gets the same hype as it deserves. ऐसा क्या करना होगा जिससे इस राइवलरी का लेवल भी एक नॉच ऊपर चला जाए? बायलैटरल सीरीज खेलना इसका एक जवाब हो सकता है। Well, I always wanted to play with India because it's always been very good experience and very learning because the way they are playing right now is really great. लेकिन वो भी प्लेयर्स के हाथों में नहीं है, as Harmanpreet Kaur rightly pointed it out. These things are not in my hand, but yeah, whenever we get the opportunity, we always enjoy playing against Pakistan. गौतम गंभीर ऑफिशियली बन चुके हैं इंडिया के हेड कोच एंड हिज फर्स्ट असाइनमेंट विल बी इंडियाज टूर टू श्रीलंका स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जुलाई। स्पेकुलेशंस पर अगर जाएं तो हार्दिक पांड्या वाज इन लाइन टू बिकम इंडियाज नेक्स्ट T20 कैप्टन एंड इट वाज आल्सो फेयर कंसीडरिंग हाउ ही वाज द वाइस कैप्टन नॉट सो लॉन्ग अगो। लेकिन इन शॉकिंग डेवलपमेंट सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है इंडिया का अगला कप्तान एंड शुभमन गिल विल बी हिज डिप्टी हु रिसेंटली लेड इंडिया टू अ 4-1 विक्ट्री अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ODIs की कप्तानी शर्मा जी के पास ही रहेगी। Him and Virat Kohli have been named in the squad along with KL Rahul, Shreyas Iyer, Ryan Parag and Shivam Dube being some of the more notable inclusions. संजू सैमसन का नाम आपको T20 स्क्वाड में नजर आएगा। And surprisingly, Abhishek Sharma, despite hitting a cracking century in just his second T20 international, misses out. काफी memes भी देखने को मिली regarding these developments. A few of these stood out. Share your favorite memes using the hashtag PitchPulse. After 40,000 deliveries, 704 wickets and 188 test matches, one of the greatest fast bowlers this generation has seen, Jimmy Anderson, is now retired. I think his character and his desire to constantly want to get better, I think is one thing that everyone who gets an opportunity in England should look to emulate. Jimmy's career has just got better and better over the years, in particular over the last 6, 7, 8 years. Goodbyes are never easy, especially when you are still super fit to represent your country and willing to run in the hard yards. Khair, abhi ke liye fikr not. Anderson has already taken up the fast bowling mentor role and will be seen with the English Test team all summer. Ekdam smooth transition scene. In other news, Jimmy's fast bowling partner in crime, Stuart Broad, was honoured for his services at his home ground in Nottingham before the start of the second test between England and West Indies. Pavilion End at the Trent Bridge has been renamed to the Stuart Broad End now. Talk about greatness being immortalised. And now in some more news. Catches win you matches, चाहे पहाड़ों में क्यों ना खेल रहे हो।
वैसे PCB should consider getting this guy on board as a fielding consultant. Indian cricketer Veda Krishnamurthy hopped on the trending reel bandwagon. Tauba tauba. Not so long ago, कुछ cricketers Wimbledon attend करते हुए नजर आए. Let me know in the comments section इनमें से कौन लग रहा है hit और कौन not so hit. For me, Pat Cummins stole the show hands down. The Bumrah fever is as real as it gets. He's inspiring the next gen even in Pakistan. This is how Stuart Broad tried facing a delivery from Jimmy Anderson. This was the same delivery faced by Hashim Amla in 2008. Jemmy or gang ka jamming session. And it's a wrap on this week's episode of Pitch Pulse. अगर आपको episode पसंद आई है और अगर नहीं भी आई तो like, comment, share and subscribe to Grassroots Cricket. Until we meet again, tata, bye bye.